There is something very dangerous which is happening in our country and I think it needs to be spoken about. Notice the pattern. पहले नीट पेपर लीक, फिर CBSE, alongside parallelly the rise of this cockroach Janata Party. Why the word cockroach? What is all of this pointing towards? It is pointing towards a very dangerous time in the future of our country and possibly a dark time. इससे पहले whatever was happening in our country was around nationalism, Hinduism and national pride. The narrative has shifted. The youth doesn't seem to care enough about this stuff. They care about dignity and unemployment. ये पूरा का पूरा सरकारी नौकरी का जो स्टेट हमारे देश में बना हुआ है, अब ये चैलेंज हो रहा है. ये वैसे भी अंडर प्रेशर था, बट नाउ विद ऑल दीज पेपर लीक्स एंड विद दिस एंटायर यूथ एनर्जी एंड दिस डिससैटिस्फैक्शन व्हिच इज राइजिंग, compounded with the layer of social media which is amplifying everything, because वहाँ पर predominantly youth ही बैठा है, तो उनके इश्यूज ही नेशनल इश्यूज बन रहे हैं. यूथ को चाहिए होता है चेंज, वो चेंज के लिए वोट करेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि जिस चेंज के लिए वो वोट करेंगे वो पॉलिटिकल होगा. जो चेंज उनको सच में चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो इकोनॉमिक है, और जिसके अंदर टाइम लगता है. द टाइम लैग इज टू ग्रेट. द यूथ डज नॉट हैव पेशेंस बिकॉज दे विल मिस दैट क्रिटिकल पीरियड ऑफ देयर लाइफ वेयर ऑल ऑफ दिस रियली हैपेंस, वेयर द सरकारी नौकरी मैटर्स, वेयर द पेपर लीक मैटर्स, वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट थिंग मैटर्स. व्हाट इज लाइकली टू हैपन इज, इन माय ओपिनियन, नॉट वेरी पॉजिटिव. आई थिंक द एंटायर फ्यूरर राइट नाउ इज अबाउट कॉम्पिटेंस. इंडिया में ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है और अब वोट उसको मिलेगा जो कॉम्पिटेंस दिखाएगा. प्रॉब्लम ये है, एंड दिस इज माय बिगेस्ट कंसर्न, दिस विल प्रोबेबली गेट हाईजैक्ड बाय द स्मार्टेस्ट प्लेयर इन द गेम. The smartest player in the game could come from anywhere, could come from BJP, could come from Congress, could come from Cockroach, could come from Aam Aadmi Party. We don't know where this person or this entity will come from, but a new entity will probably arise and they will make a fool out of us yet again. They will make us believe that the change that we read is political, whereas the change is economic, the change is administrative, the change is psychological, the change is mental. Nobody will admit this because nobody gets a vote for this. If I am right और ये ट्रांजिशन होगा तो ये ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए. This transition should not become violent. It should not disturb the country. It should not take us back. It should only take us further. Will it take us further? I don't know about that. Will it take some other vested parties further? That I am quite sure about, and that is the reason for my concern.